ओके। तो आज का लेक्चर कुछ वेक्टर स्पेसेस में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कि जैसे कि रो स्पेस क्या होता है, कॉलम स्पेस क्या होता है ना, नल स्पेस क्या होता है, इन सब की फिर डायमेंशन ऑफ अ नल स्पेस जिसको हम कर्नल बोलते हैं लेटर ऑन। तो आइए जरा इनके एक एक चीज को डिफाइन करते हैं, फिर रिजल्ट देखते हैं इसके ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है रो स्पेस क्या होता है, कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के रोज को लेकर हम एक स्पेस बना दें, या कह सकते हैं उनके रोज से हम जनरेट करा के एक स्पेस बना दें, दैट विल बी कॉल्ड अ रो स्पेस। डिफाइन देखिए, रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मिनट जरा हम एक दूसरा पेज ले लेते हैं, ये पेज रिस्पॉन्ड कम कर रहा है। बार बार रुकना पड़ेगा रिस्पॉन्डिंग जो है। एक और नया पेज ले लेते हैं। ये हम इस पे लिखते हैं। ठीक, ये नया पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम रो स्पेस को डिफाइन करते हैं। रो स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सिंपली उनके रोज के द्वारा जो स्पेस जनरेट होता है उसे रो स्पेस बोलते हैं। ठीक है, तो द स्पेस द स्पेस जनरेटेड बाय जनरेटेड बाय रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो स्पेस। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एक मान लो एक मैट्रिक्स ले लिया, जनरल मैट्रिक्स मान लो हमने ये ले लिया A11, A12, A13, A21, A22 और A23। ये मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर की है, 2 by 3 ऑर्डर की। तो अगर हम रोज लेते हैं, जैसे कि कोई भी हमारे पास स्पेस है वो इन रोज से जनरेट हो, लाइक दिस इज A11, A12, A13, है ना। और सिमिलरली दिस इज A21, A22, A23। तो यहाँ पर जो रोज के एलिमेंट हैं वो हमारे पास वेक्टर्स को फॉर्म करेंगे। तो ये वेक्टर वन और ये दूसरा दो वेक्टर, यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं जिसके अंदर कितने हमारे पास एलिमेंट है, 1 2 3, 3 टपल्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास सारी मैट्रिक्स के अंदर रियल इंट्रीज हैं तो हम कह सकते हैं दिस इज बिलोंग्स टू, this element is belongs to R3, we can say this is also belongs to R3 and like that. So it means that जो ये सब स्पेस बनेगा उसकी जो डायमेंशन या कह सकते हैं उसके अंदर जो मेंबर्स होंगे, दैट इज फ्रॉम फ्रॉम R3। R3 का मतलब क्या है, कि हमारे पास रोज के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने कॉलम्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर कॉलम कितना है, 3। तो इसका मतलब जो इसका रो स्पेस बनेगा, जो भी रो स्पेस होगा, दैट विल बी द सब स्पेस, दैट इट विल बी द सब स्पेस ऑफ R3, है ना। वो R3 का सब स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 क्या है, दैट इज योर नंबर ऑफ कॉलम, है ना। तो रो स्पेस जब बनेगा तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उतने उसमें टपल्स आ जाएंगे। तो हमारे पास उस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन राइट हियर, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इफ ए if A is a matrix,
is a m by n real matrix, then its rows, then its row space is a subspace of Rn, ये क्वेश्चन आ चुका है तुम्हारे पास, ठीक है। सब स्पेस ऑफ आर एन है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, जो कॉलम यहाँ पर कॉलम है उसके टपल में से बिलोंग करेगा अगर रो स्पेस की बात करें। इसी तरीके सिमिलरली अभी जो कॉलम स्पेस की बात करेंगे तो वो आर एन से बिलोंग करेगा, क्योंकि उसमें एक कॉलम के अंदर उतने ही मेंबर्स होंगे जितने उतने ही उस टपल में एलिमेंट्स होंगे जितने वहां पर रोज के अंदर एलिमेंट्स हैं। जब हम कॉलम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि हम रो की बात कर रहे हैं तो रो के अंदर कितना नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दैट टपल्स हमारे पास आएगा। इट मीन्स यहाँ पर n कॉलम है तो इसका मतलब आर एन से बिलोंग करेगा, जो भी हमारे पास रोज होंगे वो रोज आर एन से बिलोंग करेंगे। देन द सब स्पेस जनरेटेड बाय दैट रोज विल बी द सब स्पेस ऑफ आर एन। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं डेफिनेशन कॉलम स्पेस की। Column space of a matrix, column space of a matrix, so the space generated by the space generated by the column generated by columns of a matrix is called its column space. So column space of a matrix, the space generated by columns of a matrix is called its column space, है ना, ऑब्वियसली बात। सिमिलरली अगर इसमें हम लिखना चाहें, अगर m by n की हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट A is a m by n real matrix, real matrix मतलब all the entries are from real numbers matrix, then its column that its column space is a subspace of R, the subspace of, ठीक है। So if I'm just saying if this A, if you are just saying this is A is a matrix of like this A11 A12, समझ में आ रहा है ना, 1 A21 A22 A2n and up to this is m rows and m1 up to am2 dot this is your amn, है ना। इस तरीके से हमारे पास कोई भी सपोज m by n ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, द मैट्रिक्स ऑफ m by n ऑर्डर। ओके, ठीक है। सो देन अगर हम बात करें रो स्पेस की, रो स्पेस जो होगा इनके रूट से जनरेट होगा। देन रो स्पेस ऑफ ए is nothing, this is the row generated by like this, so this is your A is uh यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये ऐसे जनरेटेड बाय दिस रूट, इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट है रो का वो A11 A12 अप टू A1n, ये हो गया।
सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा A21 A22 अप टू दिस इज A2n। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। दिस इज AM1 AM2 अप टू AMn। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे के सारे रोज है। इनसे जनरेटेड हमारे पास जो स्पेस होगा दैट इज योर रो स्पेस। इसी तरीके से कॉलम के बारे में लिखेंगे, कॉलम स्पेस of A is nothing. This is generated by the columns. So this means A11, A21 up to AM1, फिर A12, A22 up to AMN, M2 and so on. जो A1n है, A2n है up to AMN, ये हमारे पास रो आ गया, sorry column space आ गया। तो column space is generated by the columns of the matrix and row space generated by the rows of the matrix. Okay, okay, so dimension of the row space and the column space both are equal of the rank of the matrix। जो भी रैंक होगी, रैंक ये बताती है कि उसके अंदर एलआई हमारे पास रोज कितने हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास जनरेटिंग सेट तो मिल गया कि जो जितने भी हमारे पास रोज हैं वो जनरेट कर रहे हैं हमारे पास किसको, रो स्पेस को। बट उसकी डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा एलआई वेक्टर्स में। ठीक है, तो कोई हमारे पास जनरेटिंग सेट है तो उसको रिड्यूस करके हम लीनियर इंडिपेंडेंस सेट फाइंड करते हैं। जो लीनियर इंडिपेंडेंट सेट्स होते हैं जितने, उतनी ही डायमेंशन होती है, क्योंकि वो हमारे पास एलआई होने के साथ साथ जनरेटिंग ही है। क्योंकि और जो जनरेटिंग सेट थे वो रिमूव हो गए बाई दीज थ्री जो भी एलआई वेक्टर्स रहे होंगे। ओके, तो इसलिए हम हमारे पास अगर हम देखें तो जब रिड्यूस करते हैं तो जो हमारे रो रैंक जो रैंक होती है, रो रैंक क्या कह सकते हो, कॉलम रैंक क्या कहते हैं, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमारे पास जो डायमेंशन होती है रो स्पेस की या फिर कह सकते हो कॉलम स्पेस की, वो वही होती है जो उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। ओके, तो रैंक ऑफ द, so you can just write a result, रिजल्ट देखो लिख लो, द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, dimension of row space and of the column space, row space and column space of a matrix are both equal to the rank of the matrix। ओके, तो हमारे पास क्या है कि डायमेंशन जो होता है रो स्पेस की या फिर कॉलम स्पेस की, वो उस रैंक की जो हमारे पास उस मैट्रिक्स की जो रैंक होती है उसी के इक्वल होता है। तो अब हम बात करते हैं, डिफाइन करते हैं नल स्पेस को। नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स, so let A be a m by n matrix, then null space of A is defined as let A be a m by n matrix, then null space of A is defined as how we say कि वो सारे वेक्टर्स जो नल हो जाते हैं उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की स्पेस एक नल मैट्रिक्स आ जाती है। तो
null space is defined like this of A is just equal to such x bar such that a x बार का मतलब वेक्टर है ना, वो सारे वेक्टर जिसको a से मल्टीप्लाई करने पे हमको एक नल वेक्टर मिल जाए। ओके, तो उस केस में जो हमारे पास नल स्पेस होगा वो सारे वेक्टर्स जिसको हम a से मल्टीप्लाई करने पर जीरो पा रहे हैं, तो वो सारे के सारे हमारे पास वेक्टर्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स। सो वेर यू कैन से कि जो हमारे पास एक्स बार है, ओके, तो दैट इज ऑफ ऑर्डर n/1, है ना, n/1 हमारे पास ऑर्डर है, वेर एक्स बार इज अ n/1 vector by one vector and 0 bar is a m/1 vector. Okay, so when you multiply with a you will get m/1 vector of order m/1. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जो नल स्पेस होगा दैट इज द नल स्पेस इज द n/1 है तुम्हारे पास, है ना, इसका मतलब है n का मतलब n रोज है, वन कॉलम है, इसका मतलब एक कॉलम वेक्टर है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी बिलोंग्स टू Rn, है ना, वो Rn का हमारे पास मेंबर होगा, तो यू कैन से हमारे पास नल स्पेस बनेगा दैट इज आल्सो अ सब स्पेस ऑफ Rn। तो नल स्पेस ऑफ A इज अ सब स्पेस, just subspace of R. Okay, so these are definitions of the row space, column space and null space. तो null space बेसिकली जो होमोजीनियस सिस्टम होता है ना हमारे पास, हम आगे देखेंगे कि जो होमोजीनियस सिस्टम हम लोग सॉल्व करते थे, तो होमोजीनियस लीनियर सिस्टम उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम सॉल्व करके वो वेक्टर्स निकालेंगे जो नल स्पेस को बनाते हैं। कंडीशन याद रखना है नल स्पेस की, ax इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, तो अब कुछ रिजल्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला ये है, पहला रिजल्ट ये कहता है कि इफ ए इज अ m/n मैट्रिक्स then dimension of null space so if it is a m/n matrix then dimension of the null space of A is n minus r। Okay, where R is the rank of the matrix। Okay, so if A is the m/n matrix, then dimension of the null space of A, ध्यान देना, dimension of the null space of A, अगर null space की dimension निकालना है तो होगा n minus r, if r is the rank of the matrix। ठीक है, तो इस तरीके से हम null space की डायमेंशन को कैलकुलेट करते हैं, दैट विल बी n minus r। दूसरा है, दूसरा रिजल्ट ये है कि if two matrices are row equivalent
If two matrices are row equivalent, then their null space are same. Two matrices are equivalent, then their null space or same. इनके null space same होते हैं. तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू. अगर null space same है तो जरूरी नहीं कि वो हमारे पास इक्विवेलेंट हो. But if the two matrices are row equivalent, then their null spaces are same. However, converse is not true. Not true. Converse is not true. Okay. So दिस इज टू रिजल्ट. सेकेंड रिजल्ट यही हमारे पास कहता है कि हमारे पास टू मैट्रिसेस ऑफ द रो इक्विवेलेंट देन देयर नल स्पेसेस विल बी सेम आर सेम. ओके. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इट मींस दैट कि अगर हमारे पास द नल स्पेसेस सेम है तो मैट्रिसेस के, तो नीड नॉट टू बी द मैट्रिसेस आर सेम. ओके. इक्विवेलेंट व्हाटएवर. ओके. सो आइडेंटिकल सब स्पेसेस क्या होते हैं इसके ऊपर जरा देख लेते हैं. मतलब सेम ही एक ही तरीके का सब स्पेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आइडेंटिकल सब स्पेसेस. तो लेट W1 and W2 be two subspecies of a finite dimensional vector space okay subspace of finite dimensional vector space V and let S1 and H2 be their spanning sets respectively. Okay, so S1 H2 of their spanning set. You know that spanning set का मतलब उस सेट से हम सारे के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं, है ना. तो S1 जो है W1 का स्पैनिंग सेट है और H2 जो है W2 का स्पैनिंग सेट है. क्लियर. देन W1 and W2 then W1 and W2 are identical. So you can just see W1 is just equal to W2. If every vector of S1 can be expressed as linear combination every vector of S1 can be expressed as a linear combination of vectors of H2 and every
and every vector of H2 can be expressed as linear combination of vectors of H1. Vectors of S1. Okay. तो दे आर सेइंग कि S1 H2 जो है वो हमारे पास स्पैनिंग सेट्स हैं, तो देन W1 W2 आइडेंटिकल हम कहे जाएंगे अगर S1 का कोई भी मेंबर H2 के जो मेंबर्स उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, और S1 के जो मेंबर्स है वो H2 के जो मेंबर्स है वो S1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सके। तो आइडेंटिकल का मतलब है W1 is just equal to W if every vector of S1 can be expressed as linear combination of vectors of S2 and every vector of H2 can be expressed as linear combination of vectors of S2. Okay, in that case the W1 is identical to W2 है ना, W1 और W2 क्या है, इक्वल है। ओके, तो आइए नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कुछ रिजल्ट्स हैं, तो लेट अस राइट द रिजल्ट्स। तो पहला है कि सपोज A and B are two matrices such that this AB is defined. AB is defined. So then row space of AB is contained in the row space of B, and अगर हम कॉलम स्पेस की बात करें एंड द कॉलम space of AB is contained in the column space of B. ओके, सो वही बोला है कि अगर सपोज A and B आर द टू मैट्रिसेस such that AB is defined, AB हमारे पास पॉसिबल है, then row space of AB is contained in the row space of B, है ना। अगर हम AB की बात करें that will be contained in the row space of B and the column space of AB is contained in the column space of A. ओके, तो हमारे पास जो ए बी का रो स्पेस होगा वो रो स्पेस ऑफ बी में बिलोंग करेगा, एंड द कॉलम स्पेस ऑफ ए बी इज कंटेन इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए की कॉलम स्पेस का में बिलोंग करेगा। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है दैट सपोज ए एंड बी आर रो reduced
Okay, so suppose A and B are the row reduced echelon form, echelon matrix, then A and B, then A and B, we have the same row space. If and only if and only if they have the same non-zero rows, it means rank same होना चाहिए. Then if they have the same non-zero rows. Okay, so this is one result कि हमारे पास A and B are the row reduced echelon matrices. Then A and B have the same row space if and only if they have the same non-zero rows. उनके जितने non-zero rows अगर same है तो उस केस में हमारे पास जो है सेम रो स्पेस को बनाते हैं. ओके, नंबर 3, टू रोज टू रो स्पेस of a matrix A is same as the column space of AP. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं. दैट इज इक्वल टू रो स्पेसेस ऑफ टू मैट्रिसेस two matrices. So row spaces of two matrices of same size are same if and only if they are row equivalent. Row equivalent. ओके, एक रिजल्ट और लिख लेते हैं फटाफट. फिफ्थ रिजल्ट दैट इज योर फील्ड. लिखिए फटाफट. टू मैट्रिसेस आर रो इक्विवेलेंट. रो इक्विवेलेंट देन their column space need not be same. इन्होंने क्या बोला कि टू मैट्रिसेस ऑफ द रो इक्विवेलेंट देन देयर कॉलम स्पेस नीड नॉट टू बी सेम. कॉलम स्पेस अगर रो इक्विवेलेंट है तो जरूरी है कि कॉलम स्पेस सेम हो. इसी तरीके से इफ द रो स्पेसेस ऑफ द टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम साइज आर सेम इफ एंड ओनली इफ दे आर द रो इक्विवेलेंट. ओके, एक रिजल्ट और लिख लेते हैं. दैट इज सिंपली the system AX is just equal to B is consistent if and only if B is belongs to column space of A.